फादर्स डे है और हर के चर्च में सेलिब्रेट होते एंड पहले हनी रेडी सेडी होके जाती हनी संडे स्कूल पहले कर लेबे से फादर्स डे के सेलिब्रेशन है और हिंदी संगे है मोर बहन हाय गाइस तो एखान हनी चर्च जाए लेबे तो और कारकुन प्रिपेयर करा थी और कारकुन हनी के प्रोग्राम दा होय तो नहीं देखते रहा तो हनी एखन चर्च आए पहुँच गेली और प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए और आदमी सब आई गए और हनी आगू दिखे बैठी कल के संडे स्कूल एंड यूथ आज गिरजे चलात रहा है तो हनी आगू दिखे बैठी हिंदे আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটি সুন্দৰ বিষয়ৰ ওপৰত দুই এটা কথা ক'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ফাদাৰ্ছ ঈশ্বৰে আমাক এটি সুন্দৰ উপহাৰ দিছে পাপা পাপা ৱৰ্ডটো শুনিয়ে আমাক পাৱাৰ আৰু ষ্ট্ৰেংথ ফিল হয় যেনেকা মা ইজ দ্য বিউটিফুল গিফ্ট অফ গড ঠিক তেনেদৰে পাপা ইজ দ্য ৱাণ্ডাৰফুল গিফ্ট অফ গড আৰু যেনেকুৱা মাৰ লগত থাকিলে আমি মৰম আৰু শান্তি লাগে ঠিক তেনেদৰে পাপাৰ লগত থাকিলে যিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেমছ হ'লেও আমি ফেচ কৰিবলৈ ষ্ট্ৰেংথ পাওঁ ফাদাৰ ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ যোনে নিজৰ হেপিনেছ ছেক্ৰিফাইচ কৰি কিনে আমাৰ সপোন পূৰা কৰে এতিয়া ইয়াত উপস্থিত যিমানো পিতৃসকলক চানডে স্কুল ফালৰ পৰা হেপী ফাদাৰ্ছ ডে আজি যে আমি ফাদাৰ্ছ ডে সেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেনে এইটো কোনে আৰু কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আহক আমি ফাদাৰ্ছ ডে হিষ্ট্ৰী জানিম আমেৰিকাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটৰ থকা উইলিয়াম জেকসন স্মাৰ্টৰ পুত্ৰী সোনোৰা স্মাৰ্ট ডট তাই যেতিয়া শুনিলে মাদাৰ্ছ ডে ঠিক তেনেদৰে যেনেকা কেইদিন আগতে আমি মাদাৰ্ছ ডে সেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ আমাৰ চাৰ্চত ঠিক তেনেদৰে তেতিয়া তাই ভাবিলে চিন্তা কৰিলে যে মই কাৰ লগত সেলিব্ৰেট কৰিম মাদাৰ্ছ ডে মোৰতো মা নাই তাইৰ মা নাছিলে তাইৰ দেউতাকে তাক আৰু তাৰ ভাই ভনীসকলক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে তো তাই চিন্তা কৰিলে মই কাৰ লগত সেলিব্ৰেট কৰিম তো এই কথা কৈ তাই চাৰ্চৰ পাষ্টাৰক ক'লে যে ফাদাৰ্ছৰো এটা দিন হ'ব লাগে ফাদাৰ্ছৰো এটা ডে হ'ব লাগে ফাদাৰ্ছ ডেও আমাক সেলিব্ৰেট কৰিব লাগে যেনেকুৱা মাদাৰ্ছ ডে থাকে তো পাষ্টাৰটো এই কথা শুনি ভাল পালে আৰু পাষ্টাৰতে এই তাক এলাউ কৰিলে মানে ফাদাৰ্ছ ডে সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ ক'লে তো ঠিক তেনেদৰে 19 জুন 1910 প্ৰথম ফাদাৰ্ছ ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে আৰু এইটো এভৰি 3rd উইক অফ জুনত সেলিব্ৰেট কৰা হয় আপোনালোকে জানেনে পাপাৰ মৰম কেনেকুৱা পাপা নিজৰ মৰম কেতিয়াও নেদেখায় মাতো কৈ দিয়ে মই মৰম কৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কিন্তু পাপা কেতিয়াও নেদেখায় কিবা এটা দুখ হওক কেতিয়াবা পৰি যাওক পাপা কয় কি থিয় হওক যদি আমি পৰি যাওঁ তেতিয়া মাহঁতে আহি কিনে আমাক মৰম কৰে উঠা কি হ'ল দুখ হৈছে ক'ত দুখ পালে ক'ত নাই এইটো দেখে কিন্তু পিতৃয়ে কেতিয়াও আহি কিনে নেদেখে পিতৃ কয় থিয় হোৱা কি হ'ল তোমাৰ থিয় হোৱা তুমি ইমান কমজোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰা এইটো কয় পাপাই নিজৰ মৰম কেতিয়াও নেদেখায় কিন্তু সি ভিতৰৰ পৰা বহুত মৰম কৰে আৰু কেতিয়া হ'লেও আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও পাপা কেতিয়াও আমাক এৰি নাযায় ঠিক যেনেকুৱা ঈশ্বৰে আমাৰ লগত সদায় থাকে থেংক ইউ ইমানে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ কিবা ক্ষমা হ'লে ক্ষমা
father. You are the best, working and walking without taking rest, walking sadly home from daily way. When I see my father on home early to make my day, I feel like I am with a God, walking and talking on the way to heaven. Here we see bright lights of color as we are in heaven. And as the day is called Father's Day, we wish our beloved Father a lovely Father's Day by all our heart. Thanking you. I dedicated this poem to my father and all the father in this world. Thank you. মই আজি দেউতাৰ উদ্দেশ্যত এটি কবিতা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। মাজত কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিম। মোৰ দেউতা কোন? দেউতা মোৰ মূৰৰ ওপৰত ঠাই, যাৰ নাই ভাগৰ, নাই অপকাৰ, পুৱাৰ পৰা নিশালৈ যাৰ জীৱন যাত্ৰাপথ, কষ্ট নহয় যেন আমাৰ বৰ্তমান ভৱিষ্যত 5 বছৰ বছৰি জোতাযোৰ কেতিয়াবা এগলি গ'ল, হাত ভৰিৰ ভিতৰ ৰং গৈ গৈ, কাহিনী বাৰ বগা হ'ল, মায়ে সদায় চিঙি যোৱা দেউতাৰ চাৰ্টৰ ফাকে, সেই পাকটতে সদায় নিশা আমালৈ আহে লজেন চকলেট, আমাক লগ পাবলৈ যেতিয়া নিশা দেউতা ঘূৰি আহে ঘৰ, পাহৰি যায় গোটেই দিনৰ দুখ কষ্ট ভাগৰ, শুনি থাকোঁ যেন লাগে প্ৰত্যেক পল দেউতাৰ মাত, ফুৰিবলৈ ভাল পাওঁ ধৰি দেউতাৰ হাত, কিদৰে কৰোঁ মই দেউতাৰ ধন্যবাদ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন দেউতাৰ ওপৰত, সদায় থাকি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, দেউতা মোৰ মূৰৰ ওপৰত চাই, দেউতা দিয়াৰ বাবে প্ৰভু আপোনাৰ অধিক অধিক ধন্যবাদ। तो गाइस हनी एखन चर्च में फादर्स डे हनी सेलिब्रेट कर ली और एखन सब कुछ खत्म हो गया। एखन हनी घर जाती हनी के चर्च में जूस दे रही तो हनी के जूस बच गए, हनी सब बोतल बोतल जूस ले जाती है और भाई के बोतल हाथ में का बोतल रहा देखा तो एलन गुड़ तो दूटा बोतल है गुड़ तो और ले गेला बोतल गिला पानी माने पानी बोतल तमे भरा हमने सोच रही आज गरम हो बोल के वैसे हमने जूस प्रिपेयर कर ली, लेकिन हो गए बारिश दे दिले तो मैंने पोपट हनीकर पोपट हो गए। मैंने पहला इतना डिस्कस हो रहे जे हनी हेडी देबे बोल के चाह देबे बोल के देबे बोल, लेकिन पीछे की होले लोड़ा की ना लोड़ा कीता की होल छोकरा गिला की चाह बनाई गेले। तुम लोग नहीं समझ रहे। हां ई बनाए रहे ई बोले बड़ी बोला। हां मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो हम लोग चाय बनाने वाला था, जोर से, बट क्या हुआ इतना धूप मतलब इतना गर्मी दे दिया ना, तो चाय तो फेल हो जाएगा, इसलिए हम लोग जूस लाने के लिए मतलब बनाने का फैसला किया। तो रॉबर्ट और मैंने चला गया बाजार आइस किनने के लिए और मतलब रासना का पैकेट थे, आइस नहीं मिला है, उसके बाद आ गया, उसके बाद देखता है तो बारिश गिर रहा है, तो बोला ये नहीं चाहिए आइस, अच्छा हुआ नहीं लाया आइस, उसके बाद क्या ऐसे जूस बना देगा बनाया ऐसे जूस ऐसे किया हो गया। और जूस में नमक डाला था या चीनी? और चीनी नमक दोनों डाला था। हाँ हमको पता था, सब लोग बोल रहे थे जूस में नमक है, बट मैं जब पिया तो मुझे पता चल गया, मैंने बोला नमक और चीनी दोनों है। इस टेस्ट लाइक ओआरएस जैसे टेस्ट कर रहा था, इसलिए हुन लास्ट जे तांती चीनी तो जे बहु माने कमती हो गेल जे तिता तांती निमक तो अलग दिले जे हेका निमक तो टेस्ट बेसी आइस। अच्छा तो এনেকা কথা তো হল, যদি আপনি মোৰ ব্লগটো চাইছে তেতিয়াহে আপুনি নিউজটো গম পাব, নহলে আপুনি গম নাপায়। एकदम एक जगह कलर टू डिफरेंस। यस ये हम लोग का बड़े पापा और पापा का भाई का रिश्ता है। सेम देखने सेम मॉडल बट कलर डिफरेंस और नंबर प्लेट, क्योंकि ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। और इसमें जीसस का वो था पर यहाँ पर अभी नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ अपन वीडियो के खत्म करत था, जितन के भाल लगले लाइक शेयर एंड कमेंट कर देबा, एंड जो तनी नया लगा हला बेल आइकन के टिप देबा, मैंने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन के टिप देबा, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड ऑल द फादर्स ओवर देयर हैप्पी फादर्स डे।